आचार्य रश्मि जी से हम निवेदन करेंगे कि मंच पर आए और अपने स्रोत से हम लोग का मार्गदर्शन करें। आचार्य रश्मि जी। Good afternoon to my most honorable guests. Please accept my humble invitation to join my journey of knowledge that I have gained from my esteemed Guru, Shri Purushottam Das Gupta ji. माननीय जन, मैं आप सबको सादर निमंत्रण देती हूँ। जिस ज्ञान की खोज मेरे गुरु जी ने मुझे प्रदान करी है, मैं उसका एक छोटा सा अंश आप सबके आगे प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा आज का विषय है राहु देव। So, what do you understand by Rahu? As per scriptures, after the churning of ocean during Samudra Manthan, when Amrit came out, both Asur and Devta got into fight for Amrit. And in order to protect Devta, Vishnu ji decided to interfere and took avatar of a beautiful lady Mohini. But Sarvabhanu had already taken up that picture. Surya and Chandrama had noticed this act and complained it to Vishnu. By knowing this, Vishnu chopped off Sarvabhanu's head with his Sudarshan Chakra. But he did not die, क्योंकि सर्वभानु ने तो अमृत का सेवन कर ही लिया था. So, in short, as told by our esteemed Guruji, head is known as Rahu and the body is known as Ketu. राहु एक ऐसा ग्रह है जिसने केश बदलकर देवताओं के साथ बैठकर अमृत पान किया था. वो किस समय क्या कर बैठे किसी को नहीं पता. Rahu is the planet of desires, passion, and is the most hungry planet of all. It is always associated with material things in life. जैसे कि हमने देखा कि राहु का शरीर नहीं है, it has only mind. किसी भी चीज का आविष्कार करना, दिमाग से अचानक किसी भी विचार का पैदा होना भी राहु ही है. The obsession in Rahu never dies. That is why during the dasha of Rahu, person becomes very, very materialistic. आकस्मिक धन प्राप्ति, खोई हुई वस्तु, राजनीति, विदेश यात्रा, उच्च पद प्राप्ति आदि विषयों में राहु का बहुत बड़ा हाथ है. कलयुग को राहु देव ही रूल करते हैं. He is the king maker and is slowly getting all the attention he wanted for all his life. All the things that we use for our pleasures nowadays is represented by Rahu. Yes, Rahu makes technology work. We can say it is a scientist who invented technology. So there is no one like Rahu. It is very important in Kali. आज पूरा वर्ल्ड आप और हम इंटरनेट से ही कनेक्टेड है. सारे न्यू गैजेट्स, मोबाइल फोन, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स राहु की ही तो देन है. राहु इज अ प्लैनेट which is full of desires and never feels shy to use all kinds of means in order to attain his goals. इसमें बदले की भावना भी बहुत होती है. That is why it is said that during eclipse, Rahu swallows sun and moon in order to avenge himself. So, Rahu is all about suddenness of events. जैसे ही राहु देव दशा में आते हैं, आपके रुकते हुए काम पूरे हो जाते हैं. और मैंने अनुभव किया है कि राहु की दशा स्थान परिवर्तन जरूर कराती है. राहु की महादशा 18 वर्ष की है. Those who pass through Rahu Mahadasha describe it as an eclipse, like a fog that blocks the clear vision of the world. राहु का मेन फीचर है मन को भ्रमित करना. This is a very, very unpredictable period. A person can rise with no income to a high income later and then fall from the heaven to earth. But for this to happen, कुंडली में वो indications भी होने चाहिए. 18 साल की महादशा में अंतरदशा भी है,
जो हमारी लाइफ को इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले आता है गुरु, राहु में गुरु। So during this period, wrong decisions can be made that will affect the whole future. So we need to be very, very careful during this period. Then comes Rahu Saturn. A person's karma can begin to manifest with special force because these are both very karmic planets. Then comes Rahu Mercury. Person's mind becomes cloudy. आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, एक वहम डाल देता है मनुष्य के मन में। Then Rahu Ketu. It's a very, very unpredictable dasha. Then comes Rahu Venus. The sexual aspect of life is activated during this period. फिर आते हैं राहु में सूर्य। Views on the world on one's can change during this period. Then comes Rahu Moon. ये हमारे इमोशंस और साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है। पर्सन विल फील साइकोलॉजिकल प्रेशर्स इन दोज एरियाज वेयर राहु एंड मून आर प्लेस्ड इन द नेटल चार्ट। देन इन द एंड कम्स राहु मार्स। पर्सन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल विद फायर, फास्ट ड्राइविंग, वेपन्स एंड एक्सीडेंट्स। सो इन जनरल, person who is entering the Rahu period is going into a fictional world for 18 years. Person will have thoughts that everyone is against him or everyone wants to harm him. But the truth is that all this is activated only when Rahu walks through the lowest energies. So Rahu is not always bad. Depending upon your karma, during Rahu period, if person goes to awareness, धर्म के रास्ते पर चले, then Rahu helps him और मन के सारे भ्रम उठ जाते हैं. In fact, the richest and the most successful people in the world have reached heights with the help of Rahu. So many opportunities and options unfold before a person under Rahu Mahadasha. So in the end, I would say, don't forget that Rahu is like a serpent which takes you into the darkness of ignorance if your energy is at a base level, or the wise serpent which will heal one's soul and body. So choose yourself. Thank you. हेलो, रश्मि जी ने राहु के ऊपर आपका मार्गदर्शन किया, इंग्लिश में कुछ बोला, हिंदी में भी कुछ कहा, तो हम उसका सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। राहु के 5 काम तो होते ही होते हैं कुंडली में, चाहे कहीं पर भी राहु